Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and safe. In the previous lecture, we have done the reading of the text, but in this chapter, we are going to do the exercise of lesson number 2, surrounded by trash. So, the exercise of this chapter consists on three sections: vocabulary, comprehension, and grammar. But in this lecture, we are going to cover up two sections: vocabulary and comprehension. So, let's start from the vocabulary section. And the first question in this section is: find the meaning of these words in your dictionary and use these words in the sentences of your own. Here some words are given and I will provide you the meaning of these words and you will make the sentences of these words and write them in your notebook. So here is the meaning: deposit फेंकना, rotten गला सड़ा, cigarette butts इस्तेमाल शुदा सिगरेट के टुकड़े, guilty कसूरवार and consequences नताइज. ये इनके मीनिंग्स हैं, आपने इनके सेंटेंसेस बना के अपनी नोटबुक में लिखने हैं. And the second question in this section is: find synonyms of the word trash in a thesaurus. आपने thesaurus में से trash के synonyms को find करना है and you will also write this question in your notebook. So that was the vocabulary section. Now we will move to the section comprehension. So the first question of the comprehension section is: reread paragraph number 2 of the lesson and find how the writer supports the main idea. मतलब आपने main idea को find out करना है, then आपने बताना है कि कैसे support करता है, और वो हम कैसे बताएंगे? Through definition, evidence and example. So to write the definition, you have to find out the topic of this paragraph. So firstly, let's read the paragraph and then find what this paragraph is about. And most of the time, the topic of the paragraph exists in the first sentence, like littering has become a common habit and evidence is everywhere around us. So आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैराग्राफ लिटरिंग के मुतालिक है. So you have to define littering in one sentence or two sentences. Now you will find evidence. इसके evidence क्या हैं? If we go to any public place, we find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten foods, and rotten fruits thrown carelessly on the ground, parking areas, and sidewalk. Means these are the evidence where you आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि littering हमारी society में किस कदर हो रही है. ठीक है. Now you have to find the example. So example is in the last sentence: we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and consequences. ठीक है. आप हमारे जो एविडेंस है इनको भी एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं. सो आप इस पैराग्राफ को रीड करके इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: in paragraph 3, 4 and 5, the writer is talking about the causes, effects and solution. Causes mean वजूहात, effects असरात and solution उसका हल of littering. उसने पैराग्राफ मीन्स वो बता रहा है कि राइटर ने पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 में लिटरिंग की कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन बताए हैं. तो कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन. तो उन्होंने कहा है कि आपने इनको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है. सो आप इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. मैंने आपको यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 दिया हुआ है एंड इसमें आपकी कॉजेस मौजूद हैं पैराग्राफ नंबर 3 में और मैंने उनको हाईलाइट भी किया है. आपने इन सेंटेंसेस को ऐसे ही उठा के नहीं लिख देना है, इनको रीफ्रेज करके आपने लिखना है. आप पैराग्राफ पूरा अपनी नोटबुक पे नहीं लिखेंगे, जस्ट हेडिंग देंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाया है. द कॉजेस ऑफ लिटरिंग, point 1, 2, 3, 4 means in this paragraph there are 4 causes of the littering and you have to write them in a form of sentences and you have to rephrase these sentences. Like the first cause of the littering is: people think that it is the right to litter as it is the duty of the sweepers to keep the area clean. ठीक है, वो कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ये दुरुस्त है, हम फेंक सकते हैं बिकॉज जो खाकरूब्स हैं वो
इस एरिया को साफ रखना उनका काम है, आम लोगों का काम नहीं है. So that is the main cause. And the next cause is some people think that they stay for a short while, कि मतलब वो जिस जगह पर आए हुए हैं वहाँ पे कुछ वक्त के लिए आए हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे. So it doesn't matter कि वो उस जगह को किस हालत में छोड़ के जाते हैं. And it doesn't matter what conditions they leave the place in. That is the second cause of littering. And the third cause is other feels too lazy to walk up to the trash can to deposit the rubbish in it. ठीक है, that and this is the third cause. Now the fourth cause is many people argue that there is already so much rubbish on our streets that one more shopping bag or the juice bottle would really make no difference at all. This is the fourth cause and you will write it in rephrase form. Means आपने ये sentences ऐसे ही नहीं लिख देने, इनको rephrase करना है, small करके आपने causes में लिख देना है. Now we'll move to the paragraph number 4 and 5. So the paragraph number 4 is consist on the effects of littering. ठीक है, कि हमारे जब हम लिटरिंग मतलब कूड़ा फेंकते हैं केयरलेसली तो उसके हमारी सोसाइटी पर क्या असरात होते हैं. सो लिटरिंग अट्रैक्ट्स जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी. Rotten fruits, decay fruits, food stuff emit poisonous gases and bad smell. ये हमारी second effect है, which are extremely harmful for our health. And the third effect is it gives the entire area an untidy look. So these are the effects of littering and you will also give the heading and then write it in the rephrase form. Paragraph number 5 consists on the solution. Okay, how can we overcome from the littering? And the solution is if we make a little effort to dispose of garbage, our surrounding will be clean and safe. मतलब अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और अपना जो कूड़ा है उसको सही जगह पर फेंकें, मीन्स डस्टबिन में, तो आप अपने एरिया को साफ और महफूज बना सकते हैं अपने लिए. ठीक है, और उसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं, वी कैन अडॉप्ट देम, तो आप उनको भी लिख सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the last part of our second section, comprehension section. Answer the following question. What is littering? The first question is what is littering? मतलब littering क्या है? इसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. Second question है what excuse do people give about littering public places? ये हमने अभी previous paragraphs में पढ़ा है, तो आप easily इसका आंसर find out कर सकते हैं कि जो लोग हैं वो कौन से बहाने बताते हैं public area में अपना कूड़ा फेंकने के मुतालिक. The third question is what diseases can spread due to the littering? कौन सी बीमारियां फैलती हैं littering की वजह से हमारे एरिया में, सोसाइटी में, और इसका आंसर भी आपको इजीली मिल जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन. हाउ डू आवर गुड एंड द बैड हैबिट्स इफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट्स? मीन्स अगर हमारी कुछ अच्छी आदत हैं तो वो हमारे माहौल में क्या असरात रखती हैं, और अगर हम बुरी आदत हैं तो वो हमारे माहौल पर क्या असरात रखती हैं, उसके मुतालिक आपने बताना है फोर्थ पैराग्राफ में. That was the two sections of our exercise and you will solve them in your notebooks. And I'm also sending you the word meanings and synonyms of this chapter and you will also write them in your notebook. That was for today's lecture. So Allah Hafiz and do your work neat and clean. Allah Hafiz.